in this important session where we have once again to discuss about article writing. आर्टिकल लेखन जिसमें हम चर्चा कर चुके थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और इस परिप्रेक्ष्य में हम आगे बढ़ेंगे राइजिंग प्राइसेस इन इंडिया, भारत में बढ़ती महंगाई। Rising prices in India is a very common problem few years, but now today it has taken a terrible route because each and everything which is used in our daily life, the prices of those things are increasing day by day. And as far as the ordinary life, our daily life is concerned, it is a very problematic for all of us to manage the family because of the high prices. The daily commodities, edible oil, grain, and rice and pulse, everything somehow at the high price for those people who are very poor and find hard to afford the daily needed things. And due to this rising prices, the some people cannot get their daughters married properly, and they find very hard to manage their family, and it is a matter of deep concern for all of us. And this situation, and now we see that life is totally in disorder, and because of the maximum rate prices, the important medicine, the patient cannot get better treatment themselves. So the rising prices is a very difficult one in our life, and the government must try to find out every possible ways to check it. Otherwise, the result will be a very terrible for it. And the chief reason of the rising prices is the most demand of the things as far as pairing to the productivity. We have much production, but due to some reasons we can't go for it, and that's why the prices of the things are increasing. As far as the jewelry is concerned, the gold or silver also at high price. So the government must try to take proper action against those who are holding a black market, and because of these reasons the things also are getting higher. And we have some things which need to protect the rising population, to invite the foreign companies in our country so that we can get good opportunity, and also to find some other options to regulate it. We must have to increase the rate of productivity. Then we can predict about that the prices
must be in control for few movements or for a time. तो आर्टिकल राइटिंग में जैसे आपको आता है कि बढ़ती महंगाई की समस्या जो भारत में है, तो बढ़ती महंगाई को अगर देखा जाए तो ये आज के समय में एक बड़ी ही आम समस्या बन चुकी है। भारत में हर तबके के लोग कहीं ना कहीं से प्रभावित हैं। सबसे ज़्यादा जो पिछड़े और अत्यंत छोटे वर्ग के जो लोग हैं उनके ऊपर इसने सबसे बड़ा असर डाला। वह बड़ी ही कठिनाई से किसी प्रकार से अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करते हैं और उन्हें प्रतिदिन की जो चीजें हैं उनको खरीदने में ही बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ से उनका जो जीवन है वो बड़ा असहज हो गया है। कुछ घरों में जहाँ पर गरीब परिवार में अधिकतर लोग हैं, वह अपनी बेटियों की शादी करने में असमर्थता जताते हैं, या तो उनकी शादियां विलंब से होती हैं या कभी कभी उन्हें उचित विवाह योग्य वर नहीं मिल पाता है। बढ़ते रूप से देखा जाए तो आभूषण की जो चीजें हैं, जिसमें सोना है, चांदी है, इसमें भी काफी उछाल आया है, जिससे समस्याएं और दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही। भारत सरकार ने पूरी तरीके से इसको नियंत्रित करने के बारे में विचार किया, लेकिन वो अपने आप में एक टेढ़ी खीर साबित हो रही है, क्योंकि भारत में जो चीजें हैं उनकी जो उत्पादन दर है वो अपेक्षाकृत कम पड़ती जा रही है और भारत में ओवर कंजम्पशन के कारण, अत्यधिक उपभोग के कारण चीजों की महंगाई बढ़ती चली जा रही है। और इसी कारण से किसी भी घर का जो संतुलित बजट है वो आज असंतुलित नजर आ रहा है। जो महत्वपूर्ण दवाएं हैं उनकी कीमतों में भी उछाल देखने को मिला है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर आपको फोकस करना है। इस आर्टिकल राइटिंग में स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन देना होगा। अब इंट्रोडक्शन में जैसे rising prices is one of the greatest problem in our country. For few years it is on top. कुछ वर्षों से ये मतलब ऊंचाइयों पर है। Maximum number of people are under the effect of rising prices. अधिकतर जो लोग हैं वह स्वाभाविक रूप से इसके प्रभाव में आते हैं। The poor people cannot afford even their daily needed things as edible oils and other grocery. As a result, sometimes they borrow the money from others. तो जो विशेषकर गरीब तबके के लोग हैं वो स्वाभाविक रूप से जो है अपनी किसी प्रकार से जो रोज की चीजें हैं उसको खरीद पाते हैं। उन्हें कभी कभी पैसे भी उधार लेने पड़ते हैं। Sometimes they get their daughters either married late or sometimes they are unable to find equal match for it. And when we talk about the education, जब हम शिक्षा की बात करते हैं, we cannot afford the education because the education has become very costly as far as the middle class, as far as the lower backward caste people. We find the university education, as far as the semester is concerned, as far as the practical fees, we manages a, an ordinary education. किसी प्रकार से हम बहुत सी साधारण शिक्षा दिला पाते हैं। तो that's we can say that rising prices has affected several types of people in our country, and we can find our life very uneasy because of the rising prices. Conclusion में हम कह देंगे कि the government must think about it seriously within the time. सरकार को समय रहते इसके बारे में सोचना होगा, नहीं तो जो स्थितियां होंगी वो अपने आप में बड़ी ही विकट होंगी। तो ये जो आर्टिकल के कुछ बिंदु हैं जिस पर हमें विशेष ध्यान देना है और लिखना है। अब हम चर्चा करेंगे
विशेषकर जो स्टोरी ट्रांसलेशंस आते हैं जिसमें हमें दिक्कतें होती हैं सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने में। जैसे कहा जाए कि भारत विश्व के विकासशील देशों में एक है, तो आप विचार करें कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। में से की अंग्रेजी, तो में से की अंग्रेजी में यहाँ इनका प्रयोग नहीं करना है, बल्कि हमें आपका प्रयोग करना है। जैसे इंडिया इज वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो वहां पर हमें ओएफ का यानी आपका ओ डबल एफ नहीं ओएफ का प्रयोग करना है। और दूसरा ट्रांसलेशन जैसे आ गया, कंपेरिजन करना है कि देहरादून की जलवायु इलाहाबाद की जलवायु से कहीं अधिक ठंडी है, या यूँ कह दीजिए कि ठंडी है। तो उसमें जो जलवायु फैक्टर है आपका, जैसे द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज कूलर देन दैट ऑफ इलाहाबाद। आपको ऐसा नहीं करना कि द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज कूलर देन उसके बाद में इलाहाबाद लिख देना, क्योंकि जिसकी तुलना की जा रही है वो जलवायु है, तो पहले पक्ष को हम दिस मान लेंगे और दूसरे को दैट मान लेंगे। जैसे कि पूर्व में आपको एक और चीज बताई गई होगी कि जैसे अनुवाद आपका आ गया, तालाब का पानी गंदा है, तो का की के लिए यहाँ पर हम आपका प्रयोग नहीं कर सकते, बल्कि तालाब के अंदर का पानी गंदा है, तो इसको हम यूज करेंगे वाटर इन द पॉन्ड इज डर्टी। अब इसी क्रम में देखते हैं, जैसे अनुवाद आ गया, इतिहास हमें आगाह करता है। अब आगाह शब्द का अर्थ होता है सावधान करना या जागरूक करना, तो उसके लिए आपको पता है अंग्रेजी अवेयर आती है। हिस्ट्री अवेयर्स अस। और देखा जाए तो जैसे कहा जाए एक दूसरे की बात की जाए, तो अगर दो लोग हैं तो एक दूसरे के लिए ईच अदर का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन और सोहन एक दूसरे की मदद करते हैं, तो यहाँ क्या होगा, मोहन एंड सोहन हेल्प ईच अदर। अगर दो से अधिक हैं तो हमें ईच अदर के बजाय वन अनदर का प्रयोग करना है। जैसे रवि, विकास, महेश एक दूसरे की मदद करते हैं या आपस में मदद करते हैं, तो रमेश, विकास एंड महेश हेल्प वन अनदर, इसका इस्तेमाल करें। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो अनुवादों में मिलता है कि एक राजा रहता था, तो इसका जो अनुवाद है वो कभी भी गलती से ना करें कि ये किंग लिव, क्योंकि जब भी किसी भी घटना का उल्लेख बीते हुए समय में किया जाता है तो वहां पर डमी सब्जेक्ट यानी गूंगे सब्जेक्ट दियर का प्रयोग सर्वप्रथम करते हैं। तो दियर लिव्ड ए किंग, एक राजा रहता था। और इसी प्रकार से जैसे अनुवाद आ गया, राम दशरथ के पुत्र थे, तो बच्चे गलती से क्या कर देते हैं कि राम वाज द सन ऑफ दशरथ, ये अनुवाद गलत हो जाएगा। अनुवाद आपका बनेगा राम वाज दशरथ, दशरथ के बाद में एपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, उसके बाद में सन। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं और कुछ भाषाएं होती हैं जिससे अनुवाद और देख देते हैं छोटे छोटे रूपों में। वह आने भी ना पाए कि हम चले गए, तो अब इसमें क्या होगा, पहले इसकी हिंदी हमको सही करनी पड़ेगी। जो काम पहले हुआ है उसको हमें देना पड़ेगा, यानी उनके आने से पहले हम जा
आने से पहले हम जा चुके थे। तो कौन सा काम पहले है? हम जा चुके थे। तो हम की अंग्रेजी बी हो गया, चुके थे के लिए हैड हो गया, तो बी हैड गॉन बिफोर दे केम, बी हैड गॉन बिफोर दे केम। और एक और देखते हैं, बच्चों को स्कूल पहुंचते देर न लगी कि घंटी बज गई। अब इसको अगर हम हिंदी में सही करें तो इस प्रकार से हो जाएगा, जो ही घंटी मतलब जो ही बच्चे पहुंचे घंटी लगी। देर न लगी बराबर होता है जो ही। तो as soon as children reached, REACHED, as soon as children reached, उसके बाद में कामा लगेगा, फिर क्या हो जाएगा? घंटी बज गई, द बेल रैंग। और तो इस प्रकार से कुछ ऐसे अनुवाद हैं जिनकी श्रृंखला आगे भी चलती रहेगी, जिस पर हम बनाने का प्रयास करते रहेंगे। अब डिग्री में हमें ये देखना पड़ता है कि जैसे एक अनुवाद है, वह मुझसे उम्र में छोटा है। तो कोई आदमी अगर उम्र में छोटा है तो यंगर हो जाएगा, उम्र में बड़ा है तो ओल्डर हो जाएगा। तो ही इज यंगर देन। और ध्यान रखना है कि अगर एक ही परिवार के सदस्य हैं तो सुपरलेटिव डिग्री में ओल्डेस्ट के बजाय एल्डेस्ट का प्रयोग। जैसे वह अपने भाइयों में सबसे बड़ा है, तो ही इज द एल्डेस्ट ऑफ हिज ब्रदर्स। अब आप इसमें क्यों किया गया? क्योंकि उसको अलग किया गया, सम्मिलित नहीं है, उसको अलग कर दिया गया है, उसकी अलग व्याख्या की जा रही है, इसलिए यहाँ पर जो है उसको एडजस्ट का प्रयोग किया गया। तो ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समय रहते चर्चा की जाएगी और पूरी तरीके से अभ्यास कराया जाएगा और आप लाभान्वित होंगे समय मिलने की वजह से। और पूरी तरीके से मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे और परीक्षा में अच्छे अंक लाएंगे। जो नए लोग देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोशिश ये की जाती है कि मैंने अंग्रेजी को थोड़ा सा मिनिमाइज करके हिंदी में किया है ताकि आप लोग सरलता से उसको समझ सकें। ट्रांसलेशन सेक्शन है ही, इसमें हिंदी करना पड़ता है। सबसे बेहतर यह है कि आप अंग्रेजी के कुछ शब्दों को पढ़ें, बार बार उसका अभ्यास करें, ताकि जो आपकी एक फ्लुएंसी है वो बन सके और आप आसानी से कर सकें। सब्सक्राइब एंड शेयर among others for this.
Dear students, very good evening to all of you. And now in this important session, we shall discuss about the letter writing. That is section B in intermediate syllabus as far as the question paper is concerned. When we talk about letter, there are mainly two types of letters as far as our board exam is concerned, are most important. The one is to the complaining letters based on the problems like irregular water supply, frequent breakdown in electricity, or the use of loudspeakers as well as DJ. And on the other hand, there is a letter to the editor showing concern, expressing your view on the particular problem. And there is a kind of an example as far as the complaining letter is concerned. And we have a question like this. जहां तक शिकायती पत्र का सवाल है, वो प्रश्न आपका इस प्रकार से आता है. Write a letter to the district magistrate of your problem concerning about the use of loudspeaker, DJ sounds and cause noise pollution in your area. When we have to write it, so in the first we write our address. सबसे पहले प्रेषक का पता होता है बाईं ओर, और वहां पर अगर हम विलेज के रहने वाले हैं, गांव के रहने वाले हैं, तो विलेज का नाम लिखेंगे. उसके बाद हमारा जो पोस्ट होगा उसको हम रखेंगे, और उसके बाद बड़ा पोस्ट होगा उसको लिखेंगे. उसके उपरांत हम अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कर देंगे, और फिर अपने क्षेत्र का जो पिन है वो डाल देंगे. पिन के ठीक नीचे हमारी जो डेट है वो पड़ेगी, और उस डेट के बाद हम जो डेजिग्नेशन होगा, जो पद होगा अधिकारी का, उसको रखेंगे. जैसे द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और फिर उसी के ठीक नीचे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे. इसके बाद हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो होगा. अब मेन सब्जेक्ट में जैसा कि आपको क्वेश्चंस में भी इंगित किया गया है, तो उसमें आपका सब्जेक्ट होगा अगेंस्ट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर एंड डीजे साउंड. ये आपका सब्जेक्ट होगा. अब सब्जेक्ट के बाद में फिर आपको शरावलिक मैडम का उद्बोधन कर देना है. उसके बाद सिंगल कामा लग जाएगा, फिर उसके ठीक नीचे आपको लिखना है. उसमें आपको लिखना है विथ ग्रेट रिवरेंस I would like to draw your kind attention to the problem of the unrest because of the use of loudspeaker and DJ sounds in our area. ये तो आपकी दो लाइनें हो गई जहां पर आप उनसे अपनी कृपा दृष्टि डालने के लिए कहेंगे. उसके बाद में फिर स्पेस देंगे, और एक नई पैराग्राफिंग आपकी नई लाइन से शुरू हो जाएगी, जहां पर आप कुछ यूं लिखेंगे. As we often see that there is the use of loudspeaker and high pitch sound of DJ produced in our area during the wedding or any event, which causes a lot of inconvenience to the people in our area. The sick and the old people cannot sleep properly because of the high pitched sound. It also causes a great disturbance to those students
who are preparing for the board examination or any other competitive exams. They can't read or study peacefully in such unrest and noisy atmosphere. It not only creates unrest around us but also harmful for those who are cardiac patient. I mean the heart disease. So it is very necessary to make a peaceful atmosphere around us so that we can get peace here. अब वहां से आप वाइंड अप कर देंगे और उसके बाद फिर नीचे लिखेंगे Therefore, I request you to Therefore, I request you to look into the matter carefully and take proper action who disobey the rules and regulations and allow the loudspeaker and DJ high pitch sound and provide us an immediate solution of this problem. इतना लिखने के बाद आप फिनिशिंग टच कर देंगे, फिर उसके बाद में बाएं तरफ चले जाएंगे, फिर से आप नई लाइन से लिखेंगे थैंकिंग यू और फिर उसके नीचे जो है आप योर्स सिंसियरली करके XYZ कर देंगे। जो आपका पिन है पिन कोड के बाद ठीक उसी के नीचे आपको अपनी डेट ऊपर ही लिख देनी होती है। अब अगर एक और खंड में हम आते हैं तो दूसरे खंड में हमारा होता है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली showing your concern on the problem of rising prices in India। क्या कहा इसमें कि आप अपने राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखें जिसमें आप अपने विचार को बढ़ती हुई महंगाई पर व्यक्त करने के लिए अनुरोध करें। तो इसमें भी सबसे पहले लेफ्ट साइड में प्रेषक का पता हो जाएगा और उसके बाद में ठीक उसके नीचे जैसे आपको बताया गया है गांव का नाम, फिर आपका जो पोस्ट ऑफिस है उसका नाम, बड़ा पोस्ट ऑफिस है तो बगल में उसको लिख दीजिए, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम, फिर उसके बाद पिन आपको इंडिकेट कर देना है 27/18/21। उसके ठीक नीचे डेट आपको डालनी। उसके बाद आपको पद चेंज कर देना है, द एडिटर लिखना है, ई बड़े से लिखना है, फिर उसके नीचे द नेशनल डेली या कोई भी समाचार पत्र जो है उसका मुख्यालय न्यू दिल्ली नीचे जैसा कि उसका होता है, और फिर उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यही रहेगा शोविंग कंसर्न ऑन द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइसेस इन इंडिया। उसके बाद ठीक नीचे आपको वही सर आप मैडम लिखना है, फिर उसके बाद सिंगल कॉमा रहेगा, फिर ठीक उसी के नीचे से आप लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से आप लिखेंगे थ्रो THROUGH थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर esteemed daily newspaper I would like to show my concern on the rising prices in our country। मतलब वो कहेगा कि आपके सम्मानित या उभरते हुए दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से बढ़ती हुई महंगाई पर मैं अपनी चिंता जाहिर करना चाहूंगा। इसके बाद आपको आर्टिकल टाइप का नीचे लिख देना है। तो आप नए सिरे से नए पैराग्राफ से लिखेंगे एज वी ऑफन सी दैट डे बाय डे द प्राइसेज ऑफ डेली कंज्यूमिंग थिंग्स एंड अदर थिंग्स आर इंक्रीजिंग which is a matter of deep concern for all of us because the people feel a lot of difficulty because of the rising prices. They cannot afford their own daily needs as far as the edible things and also the medicines. The prices of the important medicines are also increasing, and because of this, the poor people cannot afford a good treatment.
and avoid the treatment for the next time, as they cannot afford the costly treatment outside the other areas. And there is also other problems that those poor people are unable to get their daughters married. Either they get married late or married to unequal match. And not only this, because of the high price of the petroleum products, there is also an impact of our daily consume things. Hence, the government must find a kind of solution for these problems. Otherwise, it will adverse affect not only the entire humanity but also the ruling system. The government must have a consideration and to look this matter carefully, and especially those who are holding black the things also take a proper action against. Then we can think of a kind of solution for it. इतना आप फिनिश करेंगे, उसके बाद में फिर आप नई लाइन से इसको डिक्टेट करेंगे, इसका आप कंक्लूडिंग करेंगे. Therefore, I request you to publish my article in your respected newspaper for this kind purpose. उसके बाद में फिर आप बैक में जाएंगे और कॉर्नर में आप ऐसे लिखेंगे थैंकिंग यू, और फिर उसी के नीचे योर्स सिंसियरली, और फिर ठीक उसी के नीचे XYZ. इतना करके आप उस पत्र का समापन करेंगे. इन दोनों लेटर्स का आप अभ्यास करिएगा. फिर से अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उस पर हम लोग फिर से रिव्यू या एनालिसिस करेंगे. अन्यथा आगे और जो लेटर्स हैं उनके क्रम में हम फिर से बढ़ जाएंगे. थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस. अगर आप नए हैं तो आप कृपया सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और लाइक भी करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.
Dear students, once again, welcome to all of you. Your one Omit Sir official channel. We shall discuss here about section B, the writing section. There is letter writing. Basically, in this section, we discuss the letter writing where there is one expressing or showing concern on the particular problem. First, we just move to complaining letter. And in this section, the letter is to our district magistrate complaining against the use of the loudspeaker, the DJ to produce air noise pollution around us. बच्चों लेटर लिखते समय पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर प्रेषक का पता होता है बाईं ओर, तो सबसे पहले आपको अपने गृह स्थान यानी गांव है तो गांव को लिखना है, टाउन है तो टाउन को लिखना है। फिर उसके बाद अगर कोई बड़ा स्थल है, बड़ा बाजार है तो उसको लिखना है, और फिर ठीक उसके नीचे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। डाक का नाम पड़ेगा, पहले गांव का नाम, फिर नगर का नाम, फिर उसके बाद डाक का नाम, फिर जिले का नाम, और उसके बाद पिन कोड जो है वो पड़ेगा। पिन कोड के ठीक बाद उसके नीचे जो आपकी डेट है वो पड़ेगी। डेट में आपको DAT लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको उस दिन की जो तारीख है, जैसे संभवतः मान लें आज 25 जनवरी 2026 है, तो ऐसे 25 जनवरी के बजाय JN करके लिख सकते हैं, फिर कॉमा लगा सकते हैं, फिर 2026 यानी 2026 लिख सकते हैं। उसके बाद जो लिखा जाएगा वो आपका होगा डेजिग्नेशन यानी जो पद है। अब पद में जैसे आप लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बाद में फिर आपको ठीक उसी के नीचे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। उसके उपरांत ये पद हो जाएगा। पद के उपरांत आपको सब्जेक्ट डालना है। जैसे सब्जेक्ट में आपने DM साहब को लिखा, उसमें आप लिखेंगे अगेंस्ट द यूज ऑफ, या वैसे भी लिख सकते हैं यूज ऑफ लाउड स्पीकर ऑब्लिक DJ साउंड्स इन आवर एरिया। अब सब्जेक्ट के बाद आपका जो संबोधन का शब्द है सर ऑब्लिक मैडम, वो आपको लिखना है। फिर एक कॉमा इंसर्ट कर देना है, और फिर ठीक मैडम के बाद में जो कॉमा है उसी के ठीक नीचे से आपको उनके प्रति लिखना है, जिसमें आप लिख सकते हैं विथ ग्रेट रिवरेंस आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू द use of loudspeaker and DJ sound in our area। इसके उपरांत अब आप चाहें तो अपनी विषय वस्तु को विस्तार पूर्वक आपको ठीक उसी क्रम में नई लाइन से लिखना है। जैसे देखते हैं, as we often see that the people in our area use the loudspeaker and DJ in high-pitched voice, which cause
a lot of inconvenience to all of you and also the resident of the people in this area. The old people and sick people cannot afford sleep because of the high pitched sound. And the students who are preparing for the examination cannot read properly and to prepare for the examination. And because of this air pollution, we can't manage our work easily. We can't hear to anyone. And it is not only harmful to our health, but also it always creates unrest around us. And in this scenario, it is a very difficult and unrest around us. अब यहाँ से आप वाइंड अप करके फिर आगे लिख सकते हैं. Therefore, I request you to look into the matter carefully and take a proper action against those who use such kind of instrument to create unrest and provide us an immediate solution of this problem. इतना लिखने के बाद में जहाँ पर आप फिनिशिंग करेंगे बाएं तरफ के स्टेप पर जाएंगे और जहाँ से अपने लाइनों को शुरू करते हैं उसी क्रम में ठीक उसके नीचे लिखेंगे थैंकिंग यू. फिर उसके नीचे लिखेंगे योर्स सिंसियरली और फिर उसी के नीचे आप ABC या XYZ करके फिनिश कर देंगे. ये तो हुआ आपका कंप्लेनिंग लेटर. ठीक इसी प्रकार से अगर आपको लिखना है एडिटर को यानी समाचार पत्र के संपादक को, जैसे आपको क्वेश्चन आया राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न ऑन राइजिंग प्राइसेस इन इंडिया. कह रहा है कि आप अपने दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखो जिसमें बढ़ती हुई महंगाई पर भारत में जो बढ़ती हुई महंगाई है उस पर आप चिंता व्यक्त करना. तो शेष पता वही रहेगा लेकिन इस बार जो आपका पद है वो बदल जाएगा. लिखा जाएगा द एडिटर, उसके नीचे द नेशनल डेली, मुख्यालय आप न्यू दिल्ली या लखनऊ, संभवतः न्यू दिल्ली ही ठीक रहेगा, उसे आप डाल दें. उसके उपरांत आप जानते हैं आपका सब्जेक्ट होगा सोविंग कंसर्न अगेंस्ट या सोविंग कंसर्न ऑन द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइसेस. इसको लिखने के बाद फिर से आपका जो संबोधन है बदल जाएगा. संबोधन नहीं बदलेगा बल्कि जो उसकी विषय वस्तु है नीचे उसमें परिवर्तन होगा. संबोधन वही शराबलिक मैडम रहेगा, सिंगल कामर है. लिखा जाएगा थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर esteemed daily newspaper, I would like to show my concern on the problem of rising prices in our country, India. इसको लिखने के बाद आप नए सिरे से पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, नई लाइन से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा स्पेस देंगे और यही कहेंगे as we often see that nowadays the prices of daily consumed things as well as of other things are increasing rapidly. Hence, it is difficult for the people to afford not only the daily consumed things but also the other things. Especially the people in the poor family cannot afford even their daily needs. They struggle a lot as their economic condition is very down or low. Not only the poor but also the middle class people also think about the budget. It is a kind of disorder in as far as the
economical budget is concerned. The people who are sick cannot afford a better treatment in the absence of proper money. And that's why also we also see that the children cannot go for education because of the economical budget. As far as the girls in poor family is concerned, cannot get married at the right time. Either they get married late or sometime get married to unequal match. And not only this, but there is a lot of problem as far as the people. Some of them borrow to manage the work. Hence, if the government does not provide and does not seek a proper solution, then the problem will also become worse and it will also have worse effect on all of us and also on the country. So therefore, I नई लाइन से आप इसको ऐड करेंगे नए पैराग्राफ में therefore I request you to publish my article in your respected newspaper for this purpose. इतना लिखने के बाद में फिर आप बाएं तरफ रन करेंगे और फिर से वही थैंकिंग यू उसके बाद नीचे योर सिंसियरली XYZ। तो ये रहे दो स्टेप। इन दो स्टेप को आप अभ्यास करें, मेहनत करें। फिर कोई अगर कोई प्रॉब्लम या कंसर्न होता है तो उसका निदान समय मिलने पर किया जाएगा और मेहनत करते रहें परीक्षा के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑल ऑफ दिस। In many places, people or cities are not able to afford to fix potholes and maintain their roads. It's going to be more accessible to more impoverished regions. Other projects do either detection or repair. However, we're fully autonomous and do both detection and repair. We have two systems that work together, which other projects like the Python 5000 do not have. I'd definitely like to continue pursuing robotics and engineering. Very good evening, students. In this session, we are once again going to discuss about the next lesson in supplementary, that is Journey to the End of the Earth. The lesson belongs to a journey by the South writer Tishani Doshi, who was on Russia's research vision during the secondary students, and she visited Antarctica, the coldest, windiest, and the driest continent in the world. It was program and ice. Through this program, the writer visited there, and whatever she has observed there discussed in the lesson. In the beginning, the lesson describes about the historical background of Antarctica. When it was a warm place in the beginning, when the creatures like dinosaurs were at that time, and it was Gondwana, the amalgamated land mass, when there were high temperatures and the creatures like dinosaurs, mammoth were survived at that time. And there were huge variety of flora and fauna at that time. For the millions year Gondwana thrived, and after that the mammals got underway when the climate became cool. And it was a rare place to understand what was in the beginning. And later on, the writer Tisani Doshi started her journey from Madras to the Antarctica. Let us discuss about Antarctica. As we know, it was an amalgamated mass in the beginning of the finally it shaped the countries like today.
The most important fact about the Antarctica is that it maintains the temperature of the Earth. For a few times it has been seen because of the overpopulation, there is overconsumption of the four biological system, and because of this there is a threat of the global warming, and after the threat of the global warming it is the risk factor for melting the glaciers causing the coastal town to be shrink. Hence we are going to discuss about the some important points that reflect especially as the question perspective, and the most important one, the phytoplankton. Phytoplankton are those single celled plants that nourish at least 90% of food chain of the marine animals. And these single plants participate in an important process called photosynthesis. And one does they produce a carbonic organic compounds, glucose, produced as a food. And in spite of this, these are very important. And on the other hand, the scholars, the scientists mention that there is the depletion of the ozone layers, and they want if there is a further depletion in the ozone layers, there is a threat of global warming, and also the and because of the threat of the global warming, there is the risk of the living creatures also on the earth. And we have to move. The next important topic is the program on the ice. The writer Tisani Doshi visited the Antarctica. It also based on the program on ice. It was first headed by the Canadian Joplin, who was tired of courting the celebrities, retired men, and also the old ones, because they evaluate a little about it, and there was no a comfortable response by them. That's why the writer decided this time to go in such kind of a tour. And the Canadian Joplin, through the student program on ice, decided to secondary students to visit the Earth's important perspective so that they can understand the important process that is the climate change, that is the threat of global warming, and also a lot of harm done to the surroundings. The secondary students are the curiosity seekers. They will understand the importance of the process after knowing all kind of activities, and they will also aware the people here to understand about the planet and how to protect it. That was the program on ice. And definitely now we move to the perspective of life on the earth. Antarctica is a very important place because it is pristine, because of because of the lack of diversity, and human cannot stay here as far as this. Let us talk about the human impact on the earth planet. Before humans arrived, each and everything was in a peaceful atmosphere, in a natural process, and since the human has arrived on the earth, it made a ruckus. It made a chaotic conditions with a dominance of on this earth, itching to find out the surroundings as well as the entire perspective on the earth. And hence, the human has created a lot of problem for the entire environment. Nowadays, because of the burning fuels, there is a thick layer of the carbon dioxide around us. And because of the pollution, slowly or steadily, the temperature of the earth is increasing. And because of this, we understand that there is a threat of global warming. And because of the global warming, there is an untimely climate change. Sometimes we see that there is heavy rain, sometimes there is drought, and sometimes there is imbalance of the things in the atmosphere. And for this,
The human has made left us battling with other species. Human has a great impact on. Now we have few words in Hindi for the reason journey to the end of the journey to the end of the दक्षिण भारतीय लेखिका तिसानी दोषी की रूसी अनुसंधान जहाज पर की गई एक यात्रा है जो धरती के उस छोर की यात्रा है जहां पर बर्फ ही बर्फ है। ये मद्रास की भूमध्य रेखा से उस क्षेत्र की ओर आरंभ हुई जहां पर 9 समय विभाजक बिंदु, 6 भूखंड और 3 भाग पानी यानी जल है। इसमें लेखिका बताती है कि जो अंटार्कटिका है ये आरंभ में एक मिश्रित भूभाग था जहां पर तापमान अधिक था और डायनासोर जैसे जीव विद्यमान थे और ढेर सारी वनस्पतियां और जीव अंत में थे। कालांतर में इन जीवों का लोप हो गया और धरती पर स्तनधारियों का आना आरंभ हुआ। धीरे धीरे ये विशालकाय जो हिमखंड थे ये टूटते गए और दुनिया को आज वर्तमान जैसा आकार प्रदान किया। इसमें लेखिका बताती है कि जैसे जैसे वो भूखंड अलग हुए मध्य में एक ध्रुवीय धारा आ गई जो इसे ठंडा बनाए हुए है यानी धरती की सतह को ठंडा बनाए हुए ताकि इसका तापमान न बढ़ सके। जब तक मानव इस धरती पर नहीं आया था सब कुछ शुद्ध था और सब कुछ प्राकृतिक यानी स्वाभाविक रूप से चल रहा था। जैसे ही मानव का इस धरती पर आगमन हुआ उसने प्राकृतिक संसाधन का अत्यधिक दोहन किया और इस प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखने की उसे खुजली सी लग गई और उसने यहाँ पर अशांति पैदा कर दी जिससे अन्य जीव जंतुओं को खतरा हो गया और प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो गया। वर्तमान में देखा जाए तो फाइटोप्लैंक्टन ऐसी एक कोशिकीय वनस्पति है जो लगभग 90% समुद्री जीवों के भोजन का पोषण। If we talk about humans' arrival on this planet is concerned, the prognosis is not good because human had overconsumed the natural resources and also left us other species battling with us. We can understand that there were the many creatures departed from this planet because of the lack of natural atmosphere. And it is our planet, we must understand that we have to protect it. And after reading this lesson, we find out that Antarctica is a safe zone, a kind of place which protects us from the burning temperature. And it is necessary to protect Antarctica to maintain the living existence on the earth. So the lesson journey to the end of the earth was based on Tisani Dothi's academic tour on Russian research vessel to the end of the planet to respect the planet, to understand the planet and to aware the others about it that they must understand the threat of the global warming and a cause of unnecessary climate change, a cause of the existence of the other living being to be extinct. So it is our duty that being a human being, we must understand the importance of other living beings and to protect our earth. And hence, we वैज्ञानिकों ने सावधान किया है कि अगर ओजोन की परत में आगे फिर से क्षय हुई तो फाइटोप्लैंक्टन के क्रियाकलाप पर असर पड़ेगा और समस्त जो है खाद्य श्रृंखला चरमरा जाएगी और यहाँ तक कि जीवों का अस्तित्व भी विलुप्त हो सकता है। इसलिए जो है ओजोन परत को क्षय होने से रोका जाए। तिसानी दोषी जिस कार्यक्रम के तहत गए उसका नाम था विद्यार्थियों का बर्फ पर आना और इसी वजह से जो माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को दिया जाएगा ताकि वे अत्यधिक इसमें रुचि लें और बड़े उत्साह के साथ वे इस धरती पर जीवन के महत्व को समझेंगे, विशेषकर जलवायु परिवर्तन को जो अंटार्कटिका में पूरी तरीके से परिलक्षित हो रहा है, जहाँ पर अनेकों प्रकार से हिमखंड बनते और बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। अंटार्कटिका अपने आप में एक अजूबा है, एक रहस्य है और परीक्षण की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से अत्यंत विशुद्ध स्थान है क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता का अभाव है। तिसानी दोषी ने यहाँ पर इसकी जो जलवायु की विशेषता है उसके बारे में बताया है कि यहाँ पर अनेकों प्रकार के वायुमंडल हैं
और इस विविधता और विशुद्धता के कारण अंटार्कटिका आज भी वो स्थान है जहाँ पर हम वर्तमान भूत और भविष्य के बारे में जान सकते हैं। ये एक विशुद्ध स्थान है जिससे हम वर्तमान में रहते हुए भूत की स्थिति की का पता लगा सकते हैं। अतः ये जो पार्ट जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ है, ये प्राकृतिक उन दृश्यों का चित्रण कर रहा है और हमें उस उत्तरी ध्रुव की ओर बता रहा है जहाँ पर ये धरती अपने आप में सुरक्षित है और इसके बढ़ते तापक्रम को बचाया जा सकता है अगर हम अंटार्कटिका को इसी प्रकार विशुद्ध रखेंगे। अन्यथा बढ़ते हुए तापक्रम के Dear students, once again very good morning to all of you and welcome to in our official channel, Ramesar Official, and we are just in underway to the supplementary lessons where we are going to discuss about the next lesson number 2, and it is the Tiger King, a famous lesson. In this lesson, the writer describes about man's attitude towards animal. As we know, since the very beginning, the man has been hunting the animals, and because of its own hobbies, but as we know, it is an offense. And hence, in this story, a kind of either it is a parable or it is kind of something which is based on a fiction. But in spite of all this, it has a kind of fact or moral like that. The story is having something left before this. And in this story, there is an incident which is a very different one, but the narrator narrated it very beautifully. The narrator is Kalki, and we in this chapter the story begins to a royal family of Prithivanpuram, where the prince was born, and when he was born, the astrologers were called for the prediction of the royal prince in the family. All the astrologers visited there and predicted of the prince's greatness, saying that he will be a great king, the warrior of warriors, champion of champions, hero of heroes. But one thing was there which the chief astrologers decided not to speak about it. But the newborn child was barely 10 days ago made a great words from his upper lips. When the chief astrologers tried to make it out, then he was forced to speak about the prediction which was the important one in this story. The chief astrologer predicted of his death by a tiger. At this, the royal prince growled with the words saying that let the tigers be away. In reply, the British officer's wife told that she agreed the British officer by doing this and thanks to the king. And finally, the Tiger King retained his kingdom paying so much cost. And finally, when the Tiger King killed all the tigers in his state, now he needed to kill more to fulfill his promise to kill the 100 tiger. So now he had to marry the princess of nearby state, and he also started killing there the number of tigers. But soon the number of tigers came to an end, and finally the king succeeded to kill 99 tigers. Now one more tiger needed
to fulfill his promise of 100. But it was easy to say than to find 100 tiger. And finally, somehow, Diwan managed the 100 tiger after a lot of struggle, as he knew that the king was at high temper in a furious approach. So it is a very necessary for him to find the 100 tiger for him to make his anger silent. And finally, the Diwan managed the 100 tiger from a park at Madras and managed the tiger to release him in the forest nearby where the now few words in the story The Tiger King. The Tiger King एक ऐसी कहानी है जो एक कथानक है, कल्पित है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारा मोरल यानी नैतिकता का संदेश छोड़ जाती है। एक व्यक्ति का किसी भी वन्य जीव के प्रति इतना हिंसक होना वो स्वयं में चिंता का विषय है। एक भविष्यवाणी में पढ़ करके और किसी जीव की हत्या करना वो भी अपने आप में मनुष्य के उस जानवर के प्रति रवैये को दिखाता है। इस कहानी में राजघराने में पैदा हुए राजकुमार का उल्लेख है, जिसके बारे में ज्योतिषियों ने उसके जीवन के बारे में भविष्यवाणी कर दी थी। लोगों ने उसको महानतम बताया, योद्धाओं में योद्धा बताया, विजेताओं में विजेता बताया, और प्रमुख ज्योतिषी ने आगे कुछ कहना चाहा कि वो रुक गया, लेकिन जब उसे विवश किया गया तो उसने ये भी कह दिया कि राजकुमार का जो जन्म हुआ है वो वृष नक्षत्र में हुआ है, इसलिए इनकी जो मृत्यु है वो चीते से होगी। इस पर जो शिशु था वो डरने के बजाय पूरी तरीके से गुर्राया और कहा कोई संदेह नहीं होना चाहिए और इसमें कोई समझदारी नहीं है, बल्कि ये बताया जाए कि मृत्यु का किस प्रकार से है। इस पर प्रमुख ज्योतिषी ने सवे चीते से सावधान रहने की बात कही थी। जब टाइगर किंग युवा हुआ तो उसे उस भविष्यवाणी के बारे में याद आया और वहां से उसने चीतों का शिकार करने की अपनी कार्य योजना शुरू कर दी। जिस समय वो अपनी इस कार्य योजना में लगा हुआ था, तभी एक अनजानी बाधा उसके जीवन में आ खड़ी हुई। Very good evening to all of you, dear students. And after finishing the summary of the post section, now we enter the supplementary. Here, in this sequence, now we turn to lesson number first, the third level. The third level, you know that a kind of fantasy. Whatever we think are different, whatever we imagine, something like that we imagine about the past. The lesson, the third level refers to such kind of story by a guy, means a man named Charlie. Charlie worked in an office and one day he got late to go to his home. Hence he thought to pass a subway, a shortcut to reach his home early. By doing this, he passed through a tunnel which was unknown to him. And crossing the tunnel, he reached a level which was unknown to him, where the things were odd looking, the people were odd looking, and there were the wooden chambers, windows, and finally he called it the third level. And all this happened at Newark railway station in the Grand Central building where he worked. When Charlie told his psychiatric friend Sam Banner about this, then Sam Banner told Charlie that it was taking his wish fulfillment and he refused from reality because the modern world is full of fear, doubt, uncertainty, anxiety, war, and insecurity. And that is why he talks like this. But Charlie wanted to prove his idea the third level, for which he turned to collect the things that belong to the old, like American Rashtrapati
President Franklin Roosevelt, who also collected the stamps, and he also collected the envelope and also the newspaper of the old time. Meanwhile, he thought of all this. He decided to go to Gettysburg, the place which was considered a peaceful one. For this, Charlie went to Point Dealer to exchange his new and the current currency to the old ones, as he wanted to go Gettysburg in the past century in 1894. So for this reason, he collected the old stamps, and when he visited the counter and asked the booking clerk to give him the ticket, paying the money, then the booking clerk told him that the money that he gave was not a real one and it was a fraud. At this, Charlie realized the situation and turned back on his feet from there, as he knew that it was a kind of thing to go to jail. Hence, he departed his home. And after that, he was lost in such kind of ideas. Meanwhile, he found one envelope which was of the past time, but it was not like the other. It was written in a paper that was addressed to his grandfather, and the address was belonging to his friend Sam, where in the letter he had requested to come with Lucia to Sam. As the Sam requested both of them to visit there in such a atmosphere which is full of peace and nature, and someone was playing piano there, and the bird was singing "Sing Nearly Home" like a song, and it was a kind of fantasy that Charlie realized at the New York railway station Grand Central Building, where he found such kind of happening, whether it was real or not. जब लिफाफे को उसने खोला तो उसमें कुछ यूं लिखा था। उसके मित्र ने उस लिफाफे पर उसके दादाजी का पता लिखा था और उसमें उसने अनुरोध किया था चार्ली से कि चार्ली अपनी पत्नी लूसिया सहित वहां पर चली जाए, जिसे गेट्सबर्ग कहा गया, जहां पर तीसरा तल है। प्राकृतिक वातावरण अत्यधिक शांत, जहां पर उसका मित्र सैम अपना पुराना अनाज और भूसे का व्यापार कर रहा था, जहां पर अभी कोई सिंग नेली होम नामक गीत गा रहा था, कोई पियानो बजा रहा था। सुकून के पल थे, शांति के पल थे, और वहां पर इतना ज्यादा अशांति नहीं थी। और उसने चार्ली से कहा कि कृपया यहाँ आ जाइए, अपनी पत्नी को साथ लेकर के भी आइए और ढूंढते रहिए तीसरा तल, क्योंकि तीसरा तल है और वो तीसरा तल कोई और नहीं बल्कि केवल ये एक मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से, काल्पनिक रूप से मन की संतुष्टि के लिए किया गया चिंतन का स्तर था। इस जीवन की वो स्टेज है जिसको हम कभी कभी ट्रांजिशन मान लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं, और वास्तविकता में हम जीवन में कल्पनाओं को और वास्तविकताओं को जोड़ करके ही सामंजस्य बना करके चलते हैं। कभी कभी वास्तविक दुनिया से जब हम पूरी तरह से उब जाते हैं तो ये कल्पनाओं का दौर होता है, जहाँ पर हम चिंतन करके ही सही अपने आप को सुकून दे देते हैं। ये पाठ वास्तव में मनोरंजन हास्य से परिपूर्ण है, लेकिन एक दार्शनिक पक्ष भी छोड़ के चला जाता है, जहाँ पर हमारा तो देखा कि तीसरे तल पर उसे चीजें बिल्कुल अजीब दिखी और इसी को उसने तीसरा तल दे दिया। और जब उसने इसका जिक्र अपने मनोचिकित्सक मित्र से किया तो उसने कहा
ये आपका एक जागता हुआ सपना, आपकी इच्छा पूर्ति, क्योंकि आप वास्तविकता की दुनिया से भागना चाहते हैं। जैसा कि आजकल की जो दुनिया है वो भय से, तनाव से, चिंता से, असुरक्षा से और युद्ध से भरी हुई है। इसीलिए वो तंग आकर के इन सबसे दूर भागना चाहता है। जब भी चार्ली तीसरे दल की बात करता है, उसकी जो पत्नी लूसिया है उसे बहुत ही बेचैनी होती, बहुत ही दुखी होती, क्योंकि उसे ये डर था कि कहीं चार्ली उस परिवार को छोड़ करके, सारी जिम्मेदारी को छोड़ करके अलग हो जाए। उसे लगता था कि ये चार्ली का एक पागलपन है और वो तीसरा दल ढूंढना बंद कर। लेकिन चार्ली कहाँ मानने वाला था। वो तो सिद्ध करना चाहता था कि तीसरा दल है। इसके लिए वो पुरानी चीजों का संग्रह करने लगा, लिफाफों को इकट्ठा करने लगा, डाक टिकट को इकट्ठा करने लगा, पुराने समय के समाचार पत्रों को इकट्ठा करने लगा। और तो और वो उस जगह पे जाने लगा जहां पर उसे ऐसा लगा कि ये पुराने चलन का रेलवे ट्रैक, पुराने चलन के लोकोमोटिव डीजल इंजन, इन सारी चीजों को साबित करने के लिए वो पूरी तरह से लादे था। आखिरकार उसको द वर्ल्ड नामक एक पुराना समाचार पत्र मिल गया जिसके पेज उसको लाइब्रेरी में भी मिले, और उसने इस चीज को सिद्ध करने की कोशिश की कि तीसरा दल है। तभी क्या हुआ कि उसे कुछ पुराने लिफाफे मिल गए। उन लिफाफों में ढूंढते ढूंढते उसे एक ऐसा लिफाफा मिल गया जो अंदर से खाली। थर्ड, तीसरा दल एक फैंटेसी, एक कल्पना जो हर किसी की ऐसी ही एक कल्पना चार्ली नामक व्यक्ति के अंदर आई जब उसने ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में तीसरे दल का अनुभव किया। एक समय यूं कह दीजिए, एक रात जब वो कार्य करके ऑफिस से देर में घर के लिए निकला तो उसे जाने की जल्दी थी। उसने विचार किया कि वह जो है छोटे रास्ते से जाएगा, और ऐसा करते हुए एक सुरंग से पहुंचा। और जब वो सुरंग से होकर पहुंचा तो उसे एक ऐसी जगह नजर आई जो बिल्कुल विचित्र थी और जहां पर पुरानी चलन की चीजें थी। और वहां जो टिकट की खिड़कियां थी वो लकड़ी की थी, पूरी तरीके से पुरानी चलन की थी, धूपदान पीतल के थे। लोग जो वहां पर थे वो चश्मे पहने हुए थे और उनके ऊपर सुरक्षा कवच भी था। जिन लोगों को वहां पर उसने देखा वो लंबे कद के थे, ढीले कपड़ों के थे, मूछें बड़ी थीं और दाढ़ियां भी बड़ी बड़ी थी। महिलाएं भी लूज वस्त्रों में थीं और सब कुछ 19वीं शताब्दी जैसा था। यद्यपि वो 20वीं शताब्दी में है, लेकिन बात 19वीं शताब्दी की कर रहा है। कि उसका वो वैचारिक चिंतन है जो उसे ले जाता है 100 साल पीछे की ओर, यानी पिछली शताब्दी में, जहां पर वो सुकून के पल का अनुभव करता है और चिंतन करता है और अपने आप। Dear students, and good evening to all of you, and we are going to once again discuss about a new lesson from our prose section, that is going places. In this story there is a story of an adolescent, a teenager girl named Sufi, who is always in daydream, thinking about an ambitious life which is full of luxury, which is full of entertaining, that is her best fulfillment. Though she was born in a poor family where somehow the daily things are managed, as the father was a mechanic and also his brother was a mechanic. In such a poverty stricken family, Sufi was a different one, thought of all the luxurious things. Meanwhile, she was with her friend Jansi, and both were on way to market, talking about starting a market, where Sufi told Jansi that she would also start a boutique. But Jansi was surprised at this, as she knew that she would not get so much money to start such kind of business. But unaware of the fact, Sufi thought that she would become a manager in the biscuit factory, and she would become a model
and are a fashion designer or become an actress. Dear students, and good evening to all of you. And we are going to once again discuss about a new lesson from our pro section, that is going places. In this story, there is a story of an adolescent, a teenager girl named Shruti, who is always in daydream, thinking about an ambitious life, which is full of luxury, which is full of entertaining, that is her best fulfillment. Though she was born in a poor family where somehow the daily things are managed, as the father was a mechanic and also his brother was a mechanic. In such a poverty-stricken family, Sufi was a different one. She thought of all the luxurious things. Meanwhile, she was with her friend Jens. Jansi told her that it needs a lot of money, but Sufi thought it is a very easy thing to earn money. Meanwhile, in this perspective, she now talks about a celebrity, a football player in the United team, and he is Danny Casey. He assumes a different motive in life. She thinks of him about to become a something with him, and here she assumes an ideology to meet him in Rose window at the arcade while she was with her little brother Derek to go to market. First, she revealed this story to her brother Job. Job was surprised. Then she told her that it needs a lot of money, but Sophie thought it is a very easy thing to earn money. Meanwhile, in this perspective, she now talks about a celebrity, a football player in the United team, and he is Danny Casey. He assumes a different motive in life. She thinks of him about to become a something with him, and here she assumes an ideology to meet him in Rose window at the arcade while she was with her little brother Derek to go to market. First, she revealed this story to her brother Job. Job was surprised and did not believe at her. And finally, Sufi tried to tell this through Job to her father. Her father denied the fact that it was only unnecessary talking by her. At the meantime, Jansi was found out about it, and Jansi asked Sufi whether she met Denikase or not. As Jansi knew that Sufi was just finding the words to assume a story with it. Sufi told Jansi that she met Denikase and she requested him for an autograph for her little brother Derek. But unfortunately, neither she nor Danny Casey had a paper or pen to have an autograph. But Danny Casey promised her to meet her again at the appointed place. Hence, Sufi waits for Danny Casey at the appointed place, where only the few people would gather who waited for their loving ones. Hence, Sufi waits for him for a long time, but finding that he will not visit there and becomes disappointed. And finally, it was a great challenge for her to prove that whether she was right or wrong, as all were not trusted on her words. It was a challenging one, but finally she
found herself on the way and she became disappointed as Danny Casey would never come to visit her. The story comes to an end as an unsatisfied desire by someone who only assumes of her life. Sophie told Jancy that she met Danny Casey and she requested him for an autograph for her little brother Derek. But unfortunately, neither she nor Danny Casey had a paper or pen to have an autograph. But Danny Casey promised her to meet her again at the appointed place. Hence, Suki waits for Danny Casey at the appointed place, where only the few people would gather who waited for their loving ones. Hence, Suki waits for him for a long time, but finding that he will not visit there and becomes disappointed. And finally, it was a great challenge for her to prove that whether she was right or wrong, as all were not trusted on her words. It was a challenging zone, but finally, she found herself on the way and she became disappointed as Danny Casey would never come to visit her. The story comes to an end as an unsatisfied desire by someone who only assumes of her life. Sophie told Jancy that she met Danny Casey and she requested him for an autograph for her little brother Derek. But unfortunately, neither she nor Danny Casey had a paper or pen to have an autograph. But Danny Casey promised her to meet her again at the appointed place. Hence, Sufi waits for Danny Casey at the appointed place, where only the few people would gather who waited for their loving ones. Hence, Sufi waits for him for a long time, but finding that he will not visit there and becomes disappointed. And finally, it was a great challenge for her to prove that whether she was right or wrong. And she became disappointed as Danny Casey would never come to visit her. The story comes to an end as an unsatisfied desire by someone who only